तो दरबा साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। हरि ओम। हरि गुरु ओम। ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सबको व्यास पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं और गुरु का आशीर्वाद हमारे ऊपर बरकरार रहें और हमें सद्बुद्धि दें और अभ्युदय और निश्रेयस की मार्ग में हमें रास्ता दिखाएं। और coming to today's episode, the first two slokas are of some importance, and the second two slokas are another importance. And some discussion is already happened today. The first two slokas, Arjuna seems to be expressing his bias and apna paraya. So kind of a feeling that he seems to be expressing. That is why sometimes, previous episode we discussed that why is that Vishwarupa Darshan is on the 11th chapter, not on the 18th chapter, because that is the climax of the picture. लेकिन भगवान बोल रहा है कि देखो, वेट करो भाई, पिक्चर अभी बाकी है, because he is not fully prepared. He is preparing the disciple Arjuna, and through him the श्रद्धालु जो जिज्ञासु हैं and then साधक हैं, seekers, us also through that. That's how we need to understand. So by saying that, he's saying Dhritarashtrasya putraha. That's what one thing he said. And then at another end he's saying Asmadiyayirapi. He's saying who is Asmadiya and who is the Paraya in the larger scheme of things, actually looking at it. So that question and the answer seem to be given by him through these slokas. By looking at it, for that, Bhagavan is empirically proving with Vishwarupa Darshan that यहाँ कोई अपना पराया नहीं है, and सभी equal, everybody is equal, and इसीलिए ऐसा उसको दिखाया गया है. And while he is perceiving that and looking at it, again he is simultaneously on the go, he is expressing his dilemma. The Asutaputra, he is saying there also. He could have used Karna or Radheya. These are the words he could have used. But by using the Sutaputra, it's a derogatory term, and that fellow has taken it objection also when he was called as Sutaputra. Similarly, Dhritarashtrasya putra and Asmadiyayirapi, like that he is saying. तो दुविधा क्लैरिफाई करने के लिए भगवान विश्वरूप का दर्शन दिया है. एंड ही इज प्रूविंग दैट बॉस, ये सब जाने वाले हैं, कोई बचने वाला नहीं है. और एक्चुअली स्पीकिंग ये सब गए हुए हैं. यू आर थिंकिंग दैट दे आर ऑल एग्जिस्टिंग एंड देन दे आर टू बी किल्ड, एंड सब जिंदा हैं, सब मरे हुए हैं. एंड दैट इज द बिकॉज इन द लार्जर स्कीम ऑफ द क्वांटम टाइम एंड स्पेस, even if we understand in terms of the so-called scientific temperament, in the larger scheme of things, there is no time, there is no space. So here, the time and space are a matter of one point to the other. In the continuum, there is no, in the Mahakal mein, there is no measurement of time, and hence there is no Bhuta, Bhavishyat, and then Vartamanka. In that sense, everything is predestined. Some discussion has happened. I would look at it in such a way that on that point, everything is predestined is from the point of view of the Lord, not from the point of view of ours. जो ज्ञानी लोग होते हैं वो सीकर्स एंड देन साधना एंड ज्ञान प्राप्त करने से ये सिद्ध होता है कि nothing seems to be in our hands. Everything is through an inscrutable डिजाइन एंड देन द लीला कहो या घटना घटनापति ऐसी माया कहो या जो भी नाम दो उनको. बेसिकली इट इज लाइक, आई थिंक वन एनालॉजी व्हिच जस्ट कम्स टू माय माइंड, द मैजिशियन, द ग्रेटेस्ट मैजिशियंस ऑफ द वर्ल्ड, वेदर इट इज पॉल मैकेना और इवन आवर पीसी सरकार और whoever, when they do the magic tricks on the stage, there is no thrill for the magician. जो इंद्रजालिक जो होता है, जो इंद्रजाल का जो दिखा रहा है, उसमें उसको जानते हैं कि ट्रिक क्या है उसमें. इट इज प्रीडिस्टाइन्ड टू हिज एक्सटेंट. लेकिन जो प्रेक्षक होते हैं, जो वीक्षक होते हैं, उनको वंडरमेंट, विस्मयाविष्ट हो जाते हैं. अरे ये कैसे संभव है,
How is it possible? And how is that he is here only and then he disappeared and then he appeared, he's walking on the water, and then all those things are just in minutes and seconds, they're all getting in front of our own eyes. विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा हो रहा है. Even the best of the scientific mind sitting in that particular hall of a magician, they get wonderment and they get bewildered with the magic. But the performer knows what is the trick. And the same audience, if you take them to the backstage or have a private session with that magician, this is how a trick is played, and from the sleeve a कबूतर को निकाला जा सकता है, या एक हैट से एक रैबिट को निकाला जा सकता है, या फूल पत्ते जो भी हैं आते हैं. And because everything, nothing comes from nothing. Everything has to come from something. In that sense, when you know that the trick, how the magician is, then you know that, oh, itna hi hai kya? Oh, this is the, oh my God, I know how foolish I was. I thought that, something is actually happening. So that in that sense we understand. जब तक ये ज्ञान हमें प्राप्ति नहीं होती है, तब तक हम विस्मयाविष्ट होते हैं. एंड देन ये संसार की व्यापार में हम लोग उलझते रहते हैं. that is why it is important to शरणागति, and then भगवान का विश्व रूप जाने, भगवान की स्वरूप जाने. वही सही ज्ञान है, वही ज्ञान है. जब ज्ञान प्राप्ति होता है, you get liberated and you are no longer attached to this thing. राग द्वेष नहीं होता है. जो विरागता है, जो वैराग्य की बात जब करते हैं, you are in a state of equilibrium, स्थित प्रज्ञ होके तुम हमको सबको लीला सब आपको सही दिखाई देता है कि ये सब नाटक चल रहा है. Nothing is permanent, all thing is fleeting. And you cannot enter the river twice. That's what they say. The constantly flowing river or the constantly flux of the time, nothing is permanent. You cannot enter the river twice. So in the time, the river of the stream of the time, and you cannot enter it twice, because there's always fleeting, and all this will a kala chakra, ये भ्रमण है. इसमें ये सब बात फिर से आता है. It will come back again, and that's how we need to understand. The second two slokas I am reminded of. I am a very big fan of Hindi music, Hindi cinema music from childhood. बहुत गाने सुनते आता हूँ और कभी कभी गाता हूँ भी. इनफैक्ट several songs I sang, maybe some 1,000, 2,000 songs, and then posted on the YouTube. And I'm a खास करके किशोर कुमार का fan हूँ मैं. And when I'm looking at 28th and 29th, I'm reminded of two particular songs. One is the मुकेश का ओरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन सी जल में, कोई जाने ना जाने. That is one thing. And the other song, the 29th shloka is क्षमा गहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा नहीं यार. So these are the two songs I am reminded of, because the first one is saying that आकाशात् पतितं तोयं यदा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति. Like that, once there are, you may call it Ganga, Yamuna, Saraswati, Penna, Kaveri, Krishna, Tungabhadra, जो भी बोलो तुम. These are all different names. Once they come in, then जो समंदर में समा जाते हैं, it is only called समंदर. And even the samandar also, who named the sagars, whether it is Arctic Ocean, Atlantic Ocean, Pacific Ocean, or Hindu Mahasamudra, or Arabia, all Mahasagar, 70% of the whole भूमि मंडल जो भूमंडल है वो जल से भरा हुआ है. ये सब हमने नाम दिया है, रूप दिया है, लेकिन जो महासागर होता है, जल the whole जल सागर होता है, उसका कोई नाम रूप नहीं होता है. Once they lose their identity. Even the drinking water, the best of the water, हम तड़पते हैं हमारे अपार्टमेंट में, ड्रिंकिंग वाटर नहीं आया, फलाना नदी का, ढमकाना नदी का पानी नहीं आया घर के. But once that extremely good drinking water also, once it joins the ocean, it becomes salty, or it takes the shape of the ocean, and there is no particular name. The same names cease to exist. So that is how it goes into the whole thing. And even in management also, like, or even astrology, we go to the normal astrologers and we pay them, and then sometimes when they tell,
फलाना 1984 में, 93 में, 2006 में और 76 में तुम्हारा दादा परदादा ऐसा हुआ क्या तुम्हारा खानदान में, ऐसा बोले तो हम लोग वी गेट वंडरमेंट, अरे इनको कैसे मालूम, एंड ऑल दैट कुंडली देके वी गिव मोर पैसा एंड देन वी टेंड टू बिलीव इन मोर. अगर वही आदमी कुछ भविष्य भी बताएगा और बाई चांस इफ इट हैपेंस टू बी ट्रू in the days to come, and हमारा the belief in that particular guy who has given the forecast and he is more, and then we tend to believe him blindly, and then उन्हीं को हम बाबा बनाते हैं, स्वामी बनाते हैं, and we worship by leaving the actual gods, and we are seeing that in front of our eyes. Otherwise there would not be worship of the lesser gods or the false gods which we have discussed earlier. So similarly in management also, the person who can forecast, there are terms like planning, forecast, strategy, anticipation, and vision, mission. These are the words people use. The higher management is paid more and kept very closely to the organization, those who can have the vision ऑफ द फ्यूचर. ऐसा करने से, ऐसा प्रोडक्ट बनाने से, ऐसा मार्केटिंग करने से, ऐसा लॉन्च प्लेसमेंट करने से ऐसा हमारा रिटर्न आ सकता है. Similarly, in investment banking, couple of my brothers are working in investment banking. One must be listening right now. So they do the forecasting and then hedging, hedge fund, and equity planning and all that. So that forecasting, though, भविष्य को जो जान सकते हैं, and people who can anticipate are premium in the world. So that's what Bhagavan seems to be showing, that ये जानो कि all that, ये जो तमाशा है बोलो, खेल बोलो, लीला बोलो, मैजिक बोलो, या भगवान का चमत्कार बोलो, whatever it is, स्वरूप बोलो, विश्वरूप बोलो, लेकिन जो जानने की आप वो प्रयास करके वो ज्ञान प्राप्ति करे तो आपको ये तकलीफ या बाधा कम हो सकती है, एंड देन यू कैन बिकम अनअटैच्ड, डिटैच्ड, एंड देन योर पीस ऑफ माइंड विल बी मच मोर, एंड जो तुम्हारे मोक्ष की रास्ता विच इज ए परम पुरुषार्थ, that is what is the freedom, that is what is getting liberated. Otherwise you are getting stuck with all your attachments. The more attachments, the more you are stuck in the world. So that's how practically also we can understand these four shlokas, and if there is time we will have take up. Thank you. ठीक बात. उनके साथ 8 विधायक भी एनसीपी के साथ आए हैं, उनको भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है. ये महाराष्ट्र में एक राजनीतिक उलटफेर हुआ है और ये आपके लिए हमने जानकारी दी है. तो दरबा साहब कुछ कहना चाहते हैं तो लीला है, लीला, यही लीला है. एनीवे, सो क्या कह रहे हैं? मोदी की लीला. वही अभी नरेंद्र जो होता है ना, विष्णु पृथ्वीपति है, नरेंद्र है वो भगवान के समान है. कुछ लोग अवतार भी मानते हैं हमारे यहाँ पिछले 9 साल से. एनीवे, आज बड़ा मजा आया शर्मा जी, रामनाथ साहब को और स्वामिनी को सुनते हुए, और एंड ऑल्सो ऑन द टॉपिक दैट वी हैव चोजन टू टॉक अबाउट इट, एंड थैंक्स टू बाटे जी फॉर द जिज्ञासु एंड द ट्रिगर दैट ही गेव. सर करके छोड़ दिया, एंड अच्छा हुआ कि बहुत मजा आया. एंड इन स्पाइट ऑफ नोइंग सच नॉलेज, एक ट्रिगरलॉजिस्ट होना चाहिए ना पैनल पर. आई नो एक तो चले गए हैं लेकिन शायद वापस आएंगे, एंड दोनों ही अमेरिका से हैं ये ट्रिगर्स. दैट इज वेरी थोड़ा रोमांचक और सोचने वाली बात है. एनीवे, सो बट इन स्पाइट ऑफ नोइंग एंड हैविंग सच गुड स्कॉलर्स एंड टिप्पणी करने वाले और इतना ज्ञान होते हुए भी, in this materialistic world, why people do not follow? Because again the same song that I just gave a झलक, वो नहीं सुनता जिसको जल जाना होता है. Because ये सुनते नहीं है. Because though it is a materialistic world, there seems to be 2 words, 2 शब्द के 2 विपरीतार्थ भी ऐसा दिख रहा है मेरे को. तो वो जो 2 शब्द हैं, one is matter, the other one is the mind. Because mind and the matter, these are the 2 things which both philosophers and scientists seem to be breaking their heads. So, but both of them, but the people, general janta, majority of the people who are living
in whichever forms, seem to have taken an attitude towards them. दुविधा में है. Two types of attitude. One is doesn't matter. It doesn't matter. And the other attitude seems to be never mind. जो philosophers होते हैं, for them anyway it doesn't matter. इन्हें सकारात्मक रूप से हम देखें तो it doesn't matter. जो matter जो है it doesn't matter. जो माइंड की जो चित्त प्रवृत्ति है, जो मन चंचलता की माइंड है, it should not mind for in a philosophical point of view, never mind. But the other type of hedonistic and pleasure-seeking materialistic people also seem to be following the same two Shabdavali. One is that how does it matter? जो काम करना है, जो प्राप्त करना है, enjoy करना है, खाओ पियो मजा करो, it doesn't matter, all this. And second type of is never mind यार, क्या फर्क पड़ता है, की फर्क पड़ता है, तो it never mind. So this is the attitude, जो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है. And they are the people उसकी कर्म वही होता है, उस कर्म की अधिकार है. जब उपनिषद कहता है कि बहुश्याम प्रजाए, that is also a काम है, इच्छा है, तो कामयता, that is a इच्छा. And because of the प्रकृति की माया की वजह से ये काम विवश हो जाते हैं पुरुष. सो चैतन्यमय पुरुष जो जड़ स्थिति में या समाधि स्थिति में बैठे रहते हैं, that is a different samadhi which I am talking about, not the samadhi which we are talking on this episode, on this program. But when he says जो कामयता बहुश्याम प्रजाए, that then the karma विवश हो गया. वो भी अगर भगवान भी कर्म विवश हो गया है, and karma is the running factor, the deciding factor or the moving factor even for the सृष्टिकर्ता जो ब्रह्मा या जो भी परमात्मा है. So वह खुद जानते हुए भी, because the काल चक्र has to move. एवं चक्रम, like that there is a shloka also, this particular thing has to move. So that is why dhata yadha purvam kalpayate, again he reinvents the whole thing, and then again सृष्टि स्थिति लया ये सब चलता ही रहता है. That is how it needs to be understood, and hence it is predestined कहना उचित रहता है करके मेरा मानना है. That's how we need to synthesize and then probably conclude. And with these shlokas, what is in it for us in a practical life is to understand that the fleeting, the continuous fleeting nature of the time and the impermanence of the things that are there, which are anyway all are going to go away. So it is better to know that and then still live in it. That is the thing. Otherwise by leaving everything and then going is one part of it. यहाँ रहते हुए भी undetached like a padma patram ivambasa. That is the beauty of the Bhagavad Gita. And जहाँ तक कि NEP की and then Bhagavad Gita पढ़ाने की बात होती है as a professor and of Indian knowledge system and all, ये सब हो रहा है. लेकिन यहाँ पे सरस्वती विद्या मंदिर में जाओ, आप सुश्री विद्या मंदिर में जाओ, चिन्मया विद्यालय में जाओ या जो भी है उसमें, लेकिन वहां पढ़ने के लिए भेजने वाले पेरेंट्स कम हो गए हैं. अगर आप सही बोल रहे हैं, कॉलेज में भेजो, वहां पढ़ाओ, ये सब पिछले 2 साल में और परिवर्तन आ गया है. एंड देन NEP इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड, एंड देन आई एम रेडी टू टीच भगवद गीता, लेकिन वक्ता श्रोता च दुर्लभ. And also people are not willing to send their children to them. जो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है. Thank you.